कुछ लोगों के साथ आप साल साल गुजार देते हैं, लेकिन अक्सर उन लोगों से उतनी गहरी दोस्ती नहीं हो पाती जितनी कि चंद लोगों से पल भर में हो जाती है। उन्हीं में से एक दोस्त ने अपनी सिटी आने की दावत दी। मैंने भी बचे कुछ पैसे निकाले और निकल पड़ा। नींद से बुरा हाल था, सफ़र लंबा था, इसीलिए रात की ट्रेन पकड़ी और घोड़े बेच के सोया और सुबह फ्रेश आँख खुली और पहुंच गया हैम्बर्ग। एमा ने मुझे पिक कर लिया। तो आइए मिलवाता हूँ आपको अपनी बहुत अच्छी दोस्त एमा से, जो 1 महीने के लिए हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई तो फिर निकल गई वापस अपनी सिटी। एमा आधी जर्मन है और आधी इंडियन। वैसे तो ज़िंदगी से बहुत खुश है, लेकिन इसे अपने अब्बू से एक शिकायत है कि भैया उसे हिंदी क्यों नहीं सिखाते। Hi. Where are you from? I'm from Bremen. She's from Calcutta, India. Oh, right. Missed that part. Say namaste to all. Namaste. मेरा नाम Emma है. So all the Hindi she knows, she's gonna speak it right away, right now. अच्छा ठीक है. बढ़िया. आत्मा तृप्त हो गए. Why? आत्मा तृप्त हो गए. It means my soul is satisfied, and I say this. आत्मा तृप्त हो गए. आत्मा तृप्त हो गए. हाँ. आत्मा तृप्त हो गए. I don't know if it's the right Hindi, but okay. आत्मा तृप्त हो गए. Yeah. यहाँ पे हवा बहुत तेज होती है ना यार? Yeah. अब्बू से सीख लेते हैं, कुछ कह देती है अब्बू को सिखा दे. I'm telling people that it's not your fault, it's your father's fault. He is pretty true. He's right. मैप पे हमने नोट डाउन कर लिया है, हम इन प्लेसेस पे जाएंगे और अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम निकल रहे हैं. लेट्स गो एमा. Let's go. हरी अप, लेट्स गो. चलो. See me? I see you. You see my hair? I see your hair. Oh, you do. Oh, what is this? हमने डिसाइड किया है कि सिटी हम चल के फिरेंगे. Let's save money and spend it on something else, like food, for example. I'm a pro. Look at this. Like I am so like. You know what? You have to hold it like this. You have to have the like many stable points, like here Connections. and here, and then you can tilt it and have a very stable picture. This is how you do it, Muni. This is how you do it. I just taught her. ये इशारे दबा रही है ना. Why are you breaking the rules? I'm half Indian. Oh, she's half Indian. Look at all the food. We have to go see a church. Okay. We are approaching the Alster. सेक्रेटरी हायर की है जो आपको बताएगी ये क्या है. शिट, इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लिया. I'm about to tell you what this is, right? So, this is the Binnen Alster. It's a lake inside the city, and you can see the color of the water. We have a drink here that's called Alster Wasser. Beer mixed with lemonade. Like the color resembles the color of the Alster. तो ये वो कुछ है जो हम नहीं पी सकते. So this is something we cannot drink. I know. So she knows. I know.
ठंडक है। और एक ज़माने में जब मैं छोटा था ये मेरी फेवरेट गाड़ी होती थी। That was Tesla car. You are gonna buy this car one day. Yeah, She's very environmental friendly. She never used plastic. definitely not destroying the environment. I could go on for hours now, but I will stop here. So never use plastic in front of Emma. बाद में use करते रहना फिर। Oh, the light is so good in here. We look so good. Do you see this? Yes. Oh, you're recording. The interesting fact about this place is that we have the largest number of markets in Germany, in Hamburg, right? Yeah. अब मैं एमा को ख्वार करूँगा। एमा ऊपर देखो। एमा लुक अप। लुक अप। Look up. Yeah. Wow, nice picture. Just done. Look down. Now look right. Right. Now look left. Okay, all done. Huh? Done. Done. Yes. How much is it? 240. Okay, do you want to buy it? Window shopping, window shopping. Window shopping. सिटी की एक और स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेज़ हैं। आपने वेनिस का सुना होगा। The city has even more bridges than Venice. So this is Munib trying to find the perfect picture for his Instagram because he's crazy for the publicity. ये राट हाउस है। राट हाउस का फ्रंट व्यू। ये क्या है? This is Rat House. Uh-huh. She's learning new words from me, right? I knew this one before. Damn, your father. It's your father. Wir gehen jetzt gerade zur Kirche. Und was machen wir dann? Und danach gehen wir zum Hafen und kaufen. तो ये जर्मन थी। एमा इंग्लिश बोल बोल के थक गई थी तो जर्मन में शिफ्ट कर लिया था। कहते अभी हम किर्शे पे जा रहे हैं। किर्शे मतलब चर्च। फिर मिलेंगे।